Good evening, everyone. Today, on the occasion of Shivratri, we will do some chair exercises also. So, please keep one chair near you. Now, we will start our session with opening prayer. Sangachadvam, Sangadadvam, Samvo Manasi Janatam. देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै Om Shanti Shanti Shanti. Relax your mind, relax your body, listen to the prayer. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavedyakena Yopakarotam Pravuram Muninam Patanjali Pranjaliratasmi Om Shanti 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 Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandana Mrityormokshimamrita Om. Everyone, please keep a chair near you. We will do chair exercises also. Yes, start now. Stand on your mat. First, we will do neck and head rotation. Start. Head arch back. Then, touching your sternum notch. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now, towards right, center, left, center, right, center, left side, center. Now, 360-degree rotation of your neck. Touch your chin with sternum notch and from left to right, rotate your neck 360 degree. Then from right to left. Again, left to right. Relax. Now, keep your hand here, just above your ear. Yes. And by inhaling, just press your head towards your hand and hand towards your head. And don't shake your neck. Yes. Start. Inhale. Release. Inhale. Hold. And then release. Again. Inhale. Release. This is from right side. Now from left side again. Just above your ear. Keep your hand like this above your ear and press. Inhale, hold and release. Inhale, hold, release.
Last time. Inhale, hold and release. Now interlock your fingers. Keep your fingers at the back of your head, जहाँ पे हम चोटी बनाते हैं, and press your again head with your both the hands and hands with your head. Yes, these exercises are very good for cervical. Inhale, release. Inhale, release. One more time. Release. Now, from your front portion, from your forehead. Yes. Press it. Release. In, hold, release. Just feel the movement or vibration in your head. Release. Last time. Release. Now both the hands on your chin like this. Yes. Keep, yes. Do it. Push towards your lower jaw. Release. Release. Last time. Release. Relax. Now we will do like this. You have to make fist of your hand. Yes, fist, and hold your wrist with other hand. Yes, like this. Yes. Now this particular hand, arm just parallel to your shoulder and wrist movement. Clockwise. Hold your right hand with hold your right wrist particularly with your left hand and do it clockwise. Then anti-clockwise. You will feel the difference in your wrist movement. Some crackling sounds they will also appear. Sometimes if you have some stiffness over this particular joint. Yes. Now, other hand, hold the wrist with your right hand. Mushtika Bandh, and now rotate. Clockwise. Anti-clockwise. Yes. Relax. Now, pulse movement of your shoulders. Yes, you have to just move them upward. Inhale, hold and relax. Do it. Inhale, hold and relax. Inhale, hold, relax. Last time. Yes. Now, spread your legs, shoulder apart, and do arm movement like this. Yes. Clockwise. Very nice. Yes. Yes. This will open your shoulder joints. Relax. Now, back side. Anti-clockwise. 4, 5. With left hand. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Now hand movement. With your hands, we will stretch our hands now. Like palms up and down. Up and down. Yes. Start. Other hand you have to hold up, stretch and down. Yes. 5 times with right hand. Yes. Feel the stretch in your hands. 3, 4,
Left hand, start. Yes. Down, up, down, up, down, up, down. Now, see, keep your hands on your scapular bones like this. Cross your hands at the back, and which hand is at the upper side, just keep it in your mind. For example, in first round, right hand will be on your upper side. Yes, keep it like this and stretch your chest out, and spine should be straight. It should not be curved. Try to keep it straight and stretch. Stretch as much as you can while inhaling. Hold. Yes. Yes, release. Now with other hand. Left hand at the upper side. Yes. Stretch at your scapular bone. You will feel fine. The scapular bones, they are squeezing it. Yes. Hold. Release. Opposite hand. Last time. Do it. Stretch. Keep your neck straight. Focus on a point on your wall. Release. Other hand. Yes. Release. This particular exercise will give a good stretch to your scapular bone. Now, we will do one exercise for frozen shoulder. Frozen shoulder में, but we will do, अगर किसी को भी frozen shoulder होता है, तो ऐसे interlock करनी है अपनी, like this. Yes, you have to interlock your fingers. Yes, and now start like this. 1, 2. Inhale, stretching करो अच्छे से, ऊपर जाते हो hands की. Down. Exhale. Inhale. Yes. 5. Yes. 6, 7, 8, 9, 10. Yes. This is a very good exercise for frozen shoulder because उसमें थोड़ा shoulder का movement freeze हो जाता है. अब इसके बाद हम एक exercise करेंगे. Like this, you have to keep your hand, मुष्टिका ऐसे बंद कर लेंगे. यहाँ पे लगाएंगे ये hand, और फिर जब हम पीछे जाएंगे, जब हम इस hand की wrist की movement करेंगे like this. This is also very good for tennis elbow. Like this. See, hand, this right hand on your left shoulder, and then while going backward, you have to twist your wrist. Got it? Sabko? Yes. Do it now. Yes. Start. 1. Yes. Second, 2. Yes. 3. Yes. Now inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Yes. From left hand, yes, same movement. On your right shoulder, you have to touch your fist like this and twist your wrist at the back. Yes. Start. 1, 2, 3. महुआ आप अपनी सब ये जो मूवमेंट है like this, इसको ऐसे पीछे ट्विस्ट करना है wrist को. Yes, yes, yeah, perfect. Yes. 4, 5. Yes, this will give a good stretch to our shoulder joints. Now we will do a particular exercise for our elbow. Keep your hand like this on your elbow. Like this, you have to keep your hand on your elbow and rotate your elbow clockwise. Yes, do it 10 times clockwise. Yes, yes, yes.
Stop. Now anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अच्छे से घुमा लो, अच्छे से ऐसे बिल्कुल सर्कल में, जैसे हम सर्कल बना रहे हैं. राइट. Yes. 9 and 10. This is very good exercise for our elbow. Now, second, again, yes, clockwise. Yes, the direction in which you are moving. In other direction, you have to move after that. Yes, 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 yes. Now, other direction. Reverse. Elbow movement. You can find that your elbow is moving very nicely. This is also very good exercise for tennis elbow. Yes. Yes, relax. Now, one more exercise, very simple. Just keep your hand here and try to keep it at the back. If it's possible, you can touch your belly button also. Yes, do it. 1. Inhale. Exhale. Inhale. Try to touch your belly button if you can, as much as you can. Yes. 3, 4, 5. Yes. Now, with your left hand, see, from here, I am now doing at the back. Like this towards your waist. Yes. Yes. Last time. Yes. Perfect. Now, we will do some stretching for our torso region. So, now, Parshva Konasana. Toes together. Yes. Try, inhale and stretch towards left side. Yes. Right hand upward, then twist, turn towards left side. Hold your breath here. Very good stretch for our this particular region. Yes. Release. Other hand, inhale. Yes. Go towards right side. Hold. Release. Yes. Do it. Release. Right hand. And see at the ceiling of your room. Stretch. Release. Left hand. Release. अब हम जो ताड़ासन करते हैं, जनरली व्हाट वी डू लाइक दिस, राइट, ऑन आवर टोज एंड बिल्कुल स्ट्रेच करते हैं ऊपर से. आज हम जो ताड़ासन करेंगे 5 स्टेप्स में करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इंटरलॉक योर फिंगर्स. ठीक है. इनहेल, पहले नीचे स्ट्रेच. यस, बिल्कुल नीचे. अब ऐसे टोज के ऊपर. यस, विद देन हेयर. हाँ, धीरे से देखो 45 डिग्री एंगल है मेरा हैंड का. नीचे नीचे. यस यस. देन हेयर, and then at the last point. Yes, hold here as much as you can. Try to touch your fan. Yes. Release. Yes. Now do it yourself. Try. Yes. Try, Mahua. Yes. Very good. 1, 2, 3, 4. Yes, Michu. 5. Last.
Perfect. Yes. Yes. Release. Stretch and release. Yes. Last time. Do it now. Toes. पहले तो थोड़ा toes up कर लेंगे. Yes. Stretch your hands. Both arms like towards ground. 1. Inhale. 2. 3. Then forehead. Then up. Stay. Release on your head. अब हम टोज को पहले नीचे रहने देंगे ग्राउंड पे एंड स्ट्रेच करेंगे. सिंपल स्ट्रेच. यस. देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन फोरहेड के पास पूरा 90 डिग्री अबव एंड देन पूरा 180 डिग्री स्ट्रेच. यस. स्ट्रेच as much as you can. Yes. Release your both hands. Yes. Now after this we will do तिर्यक ताड़ासन. इसमें क्या करेंगे, अपने मैट के ऊपर ऐसे आराम से खड़े हो जाएंगे विद शोल्डर अपार्ट डिस्टेंस. इंटरलॉक योर फिंगर्स. ऊपर कर लेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे. इनहेल और ट्विस्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड. तो फर्स्ट चलो लेफ्ट साइड चलते हैं. यहां से वेस्ट ट्विस्ट करनी है. सिंपल वेस्ट ट्विस्ट करेंगे एंड देन बेंड बैक, आर्च बैक. ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, परफेक्ट. चलो वी विल डू टुगेदर. यस. नीचे टोज को ऊपर नहीं करना है, टोज को नीचे ही रखना है बिल्कुल. यस. ऐसे ट्विस्ट टुवर्ड्स राइट साइड. टोज शुड बी पॉइंटिंग बिल्कुल इन फ्रंट. Twist your waist and then bend back. Stay and look at the ceiling only. Do as much as you can and then release your hands. Now towards right side we will do. Yes. Toes नीचे ही, hands ऊपर stretch कर लेंगे बिल्कुल. इनहेल करके ट्विस्ट टुवर्ड्स राइट साइड. फीट, हमारे फीट है वो सामने ही रहेंगे, ओनली वेस्ट. यस. एंड देन बेंड बैक, आर्च बैक एंड होल्ड. रिलीज. यस. वन मोर टाइम. यस. नाउ बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. यस, डू इट. Yes, Mahua. Yes. Yes, Michu. Yes. Then arch, bend back. Yes. Release. Now right side. Yes. Stretch. Yes. Bend back. Hold. And release. राइट. ये हमारा बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग हो गया. सारा टॉर्सो से लेके पूरा हमारी लेग्स का भी पूरा मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स पूरे स्ट्रेच हो गए. अब हम करेंगे पादहस्तासन. एज यू ऑल नो, टोज टुगेदर. राइट. बोथ हैंड्स अपवर्ड. इनहेल. tuck your tummy in and bend downwards and try to touch your forehead with your knees while exhaling. Stay there. Yes, come back while inhaling. Yes. Second time, tuck your tummy in while exhaling. You have to bend down. Touch your forehead with your try to touch. Yes. Yes. Come back.
Release your hands. This is forward bending. Now we will do counter pose of this Padhastasana, Ardha Chakrasana, right? Backward bending. Yes, keep your hands on your waist like this. And if you can, you will keep your hands like this now. It will support your waist. Right. Yes. Now inhale and arch back. Stay there. Yes. Good. Yes, stay as much as you can. Yes. Release. Yes. Yes. Second time. Inhale. Arch back. Exhale. Right? Yes. Now we will do Sarvang Pushti. Sarvang Pushti, I think everyone knows now. We will start from left side. So we will keep like fist here, like this, and left hand on our, sorry, right hand on our left hand. And we will start from, okay, left hand on our right hand, and we will start from left side first. So inhale, bend down, inhale, and turn your body like this, and release here, and change your hand also on right hand side. If you bend on right hand side, you have to keep your right arm on your left arm. Right? Start now. Yes. Yes. Get down. Yes. Inhale. Turn toward left side. Release. Now left hand on the upper side. Yes. Yes. Right hand towards right side. Above the left hand. Right fist on the left fist. Yes. Yes. Last time. Yes. Release. Now, just bring a chair near you. Sit on a chair. Sit comfortably. Yes, bring a chair, everyone. Bring a chair. We will sit on chair and do some asanas. Yes. Keep your spine straight. Yes. Keep your hands on your knees. Yes. Hands on your knees. And then we will pulse our legs one by one. Like this, sit bilkul straight. Like this. Yes. Hold. Inhale and do it like this. This leg, right leg. Yes. Hold and down. Exhale. Now inhale. Yes. Keep your toes अंदर को ऐसे इसको फ्लेक्स में टू यस 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 इसको बहुआ हाँ ये राइट राइट इसको अंदर को इसको फ्लेक्स नहीं करना इसको पॉइंट नहीं करना इसको फ्लेक्स करना है राइट ऐसे होल्ड डाउन these are very good exercises for our knees also our hamstring our calf muscles they are getting strong yes hold down yes hold left leg yes down exhale last time
one leg, right leg. Yes. स्ट्रेचिंग बिल्कुल एकदम से आपको समझ में आएगी आपके हैमस्ट्रिंग में और बैक मसल्स में. Yes. Down. Last time from left leg. Yes. We had done with each leg first. Down. Yes. Now with both the legs together like this. Toes together. Yes. Both feet together. Hold while inhaling. Release. Yes. Very good. Yes. Inhale. Hold. Try to straighten your legs. Don't bend at the knees. Yes. Down. Last time. Yes. Good job. Yeah. Yes. Done. Perfect. Now we will do another exercise. That we will do flexion and extension. Look at me, पहले. As chair के ऊपर बिल्कुल straight spine के साथ बैठेंगे. And then first, while exhaling, we will go down like this. Like this. Try to touch your forehead on your knees. And then inhale back, arch back. Right? See once again. Last time, देखो आप एक बार. Exhale. Inhale. And arch back. Got it, everyone? Yes, start now. Start. These are called flexion and extension exercises. Yes. Yes. Good. Yes, Michu. Very nice. Yes. Exhale. And then inhale. Last time. Exhale. Inhale and arch back. Yes, perfect. Now, just keep your chair like this. Like this. Yes. We will just spread our legs like this. Toes bahar ko. Toes bahar ko. Very good stretching for our hamstrings and for our thighs also. Yes. इसको पकड़ लो चेयर को and थोड़ा सा अपने shoulders को ऐसे बिल्कुल ऐसे straight रखना है. Yes. Inhale. Exhale. Now breathe normally. Toes बाहर की तरफ होनी चाहिए ऐसे. Yes. ये बहुत अच्छा stretch आएगा यहाँ पे these muscles में. Yes, गीताली. हाँ, देख नहीं पा रही हूँ इसीलिए. और आगे आ जाओ. ये लो. हाँ. पैर नहीं दिखेंगे एक्चुअली. ठीक है. ऐसे अगर आप चेयर कर लोगे ना तो यू विल गेट अ गुड स्ट्रेच. गीताली है नहीं क्या चेयर? यस. यू हैव. चलो फिर. यस, ऐसे कर लो बस. ऐसे करके इसका बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा. Here in this particular middle ये जो हमारा inner thigh है ना उसके ऊपर बहुत अच्छा stretch आएगा. Yes, and sit straight बिल्कुल. Yes, breathe normally. Yes. Release. आराम थोड़ा सा अपनी body को release कर लो. फिर again inhale, exhale automatically and just straight अपनी spine को straight कर लो. Yes. Spine straight. Yes. Yes. Release. Last time. Inhale. Exhale. Hold with automatic breathing. Yes. Yes. That's the thing. Now remove your chair. Now keep it otherwise also.
अब हमारा बहुत अच्छा स्ट्रेच आ गया थाइस पे एंड हैमस्ट्रिंग पे. सो नाउ वी विल सिट एंड वी विल डू वन एक्सरसाइज विच वी कैन डू नाउ इजीली. इसमें क्या करेंगे, दोनों हैंड्स को ऊपर ले जाएंगे ऐसे. यस, बिल्कुल ऊपर सीधा ऐसे ऊपर इसको रख देंगे ऐसे, जैसे सीधा हम खड़ा करते हैं. यस, अपवर्ड पोजीशन में आएंगे आगे को ऐसे. हमारा जो हिप्स है ना, वो हमारे ग्लूट्स हमारे चेयर के ऊपर उठने नहीं चाहिए, उनको नीचे ही रखना है. राइट, ग्लूट्स हमारे चेयर के ऊपर नहीं उठने चाहिए. ऐसे टोज हमारे नीचे टच होने चाहिए. नीज हमारे स्ट्रेट रहनी चाहिए, बेंड नहीं होने चाहिए किसी भी और डायरेक्शन में सामने. यस, अभी थोड़ा आगे को, अपना थोड़ा सा आगे को मूव करेंगे बॉडी को. एंड देन ये जो चेयर है, इस चेयर से थोड़ा सा अभी पहले आगे आ जाओ. यस, थोड़ा सा आगे, लाइक दिस. देखो इतना डिफरेंस है, लाइक दिस, है ना. इसके साथ करते हैं तो इजीली हो जाएगा. ऐसे, देन ऊपर वाले हैंड्स, देन आगे, देन अपनी लेग्स को हमने अभी करा था ना, अभी उस वाले पोज. यस, स्प्रेड करो ऐसे. यस, ऐसे. देन यस, अब मुझे मसल. यस यस, और अब चेयर को पीछे से पकड़ के थोड़ा सा आगे. यस, इनहेल बैकवर्ड्स. फिर से एक बार हैंड्स को ऊपर, देन लेग्स को ऐसे ही रखेंगे. चेयर देखो इसके बीच में से बिल्कुल आराम से, क्योंकि हमने पहले स्ट्रेच कर लिया. यस, ऐसे. देन आगे को बेंड, देन पीछे से हैंड्स को पकड़ेंगे चेयर को, और फिर अपनी पूरी स्पाइन को ऐसे ऊपर की तरफ. जब देखेंगे तो स्पाइन में पूरा स्ट्रेच आएगा. इनहेल करके होल्ड करेंगे और देन रिलीज. यस, this is very good exercise for our hamstring and for our thighs again. Yes, now sit on chair. We will do उत्कट आसन. पहले हम उत्कट आसन करते हैं, चेयर नहीं होती है, लेकिन आज हम उत्कट आसन करेंगे चेयर के साथ. Yes, inhale ऊपर. Yes, exhale down. Yes, very good. Inhale, चेयर पोज करते हैं विदाउट चेयर, लेकिन आज हम कर रहे हैं विद चेयर. Yes, exhale. Very good, Mithu. Yes, inhale. Keep your spine straight. Exhale. Yes, inhale. आज हमारे पास चेयर है, so it will be a bit easier. Exhale. Yes, inhale. Exhale. Yes. Yes, we had done good exercises for our hamstring, calf muscles, for our spine and for our pelvic region. Right? Now we will remove our chair. को अलग से रख देंगे जहां पे थी. On your mats. Sit on your mats. पहले थोड़ा टोज को मूव कर लेंगे अपने लिए. यस, ऐसे मूवमेंट करेंगे. टोज की मूवमेंट कर लो. दंडासन में बैठ जाओ सब. यस, सिट इन दंडासन. अब टोज की मूवमेंट. यस, क्लॉकवाइज. वेरी गुड. एंटी क्लॉकवाइज. यस. अब इसके बाद हम कुछ नी एक्सरसाइजेस करेंगे. नी एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या करेंगे, राइट लेग को, लेफ्ट लेग ऐसी रहेगी, राइट लेग को ऐसे पेरिनियम रीजन के पास रखेंगे. यस, ठीक है. अब अपने नी कैप को ऐसे करके पकड़ेंगे, राइट, लाइक दिस. नी कैप ऐसे हाथ से पकड़ेंगे, देखो महुआ, और उसको राइट और लेफ्ट मूव करेंगे. यस, ऐसे कप सा बना लेंगे. नी कैप को राइट और लेफ्ट मूव करना है. यस, राइट. बिल्कुल मिठू ऐसे घुमाना नहीं है इसको ना, ऐसे आराम से. देखो सिंपली ये जो लेग है, ये जो हमारा नी है, इसकी कैप जो रहती है उसको बस हाथ से ट्विस्ट, इधर राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट.
आपको नी का कैप जाता हुआ दिखेगा, राइट और लेफ्ट. यस. नॉर्मल ब्रीदिंग. यस. ऐसे. अब नी कैप को ऊपर और अप और डाउन मूवमेंट देंगे. देखो ऐसे नीचे को चलाएंगे इसे, फिर ऊपर को लेके आएंगे. नीचे को देन ऊपर को. नी कैप जो है ना, सिर्फ नी के ऊपर जो कैप रहता है उसको मूव करना है, लेकिन ऐसे देखो मैं ऐसे करके बताती हूँ. ऐसे पकड़ा, इसको नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया. ठीक है, रोटेशन नहीं देना. यस. 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 5 times at least we will do up down, and 5 times at least we will do right and left. Yes, perfect. Now with other leg. Yes, do it with other leg also. Perineum पे रख लो अपनी. Yes, very good. Yes, do it. I can see you. Yes. Yes, right, left, right, left. Yes, Tanvi, you can also. आपकी शायद टांग मुझे दिखाई नहीं दे रही, कोई बात नहीं. राइट, लेफ्ट, यस, अप, डाउन. ये मूवमेंट 5 टाइम्स कंप्लीट करने के बाद थम्स अप कर देना. हो गया? 5 टाइम्स कर लो. यस. अब अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करना है. राइट. इसी लेग के ऊपर दोनों हैंड्स को अच्छे से हीट अप करके अच्छे से रब, कि हीट जनरेट हो इसमें से. यस. अब एक हैंड को उसके नी के ऊपर रख के दूसरे को उसके ऊपर अब रोटेशन करेंगे. क्लॉकवाइज 5 टाइम्स. यस. 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 अब एंटी क्लॉकवाइज. यस. Yes. 4 and 5. Now with other leg. Same thing. Yes, do it with other leg. Rub your hands. Heat generate करो अच्छे से. Yes, perfect. Yes, अच्छे से heat. गर्म हो जाना चाहिए आपका. जब लगाओ नी के ऊपर तो आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ नहीं अब ये गर्म हो गया है. Now I can do. Yes. अब उसको रोटेट करो. ऐसे कप बना के एक कप के ऊपर दूसरा कप एंड देन रोटेट. आई एम शोइंग ऐसे. हाँ, इसको उठा के मैं आपको बता रही हूँ नी को. ठीक है, क्लॉकवाइज. अब इसको एंटी क्लॉकवाइज. आज सबने फास्टिंग की है तो इसीलिए सबके जॉइंट पेन लगा होगा थोड़ा थोड़ा. राइट. यस, परफेक्ट. रिलीज योर लेग्स. अब अपना मैट के ऊपर बैठ के हम प्राणायाम सेशन करेंगे. यस. वी विल डू कपालभाति पहले. Yes, 60 strokes of Kapalbhati in Chudchin Mudra, in Sukhasan, Siddhasan, Vajrasan or Padmasan. But whichever you want. Close your eyes. Yes, पहले आराम से breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Positivity in, negativity out. Pure oxygen inside, carbon dioxide outside. Concentrate on your breathing pattern. Now Kapalbhati, 60 strokes, forcefully exhalation. Yes, do it. With every breath, just chant Om inside your body. Relax.
Now again, breathe in, breathe out, stabilize your channels by focusing on them. Now, Nasika Mudra, we will do Anulom Vilom. Inhale from both the nostrils, exhale from left, inhale from left, exhale from right, then in from right, exhale from left. One complete round, this is, do 3 rounds. Release from left side at the end. Now, Bhramari we will do Shanmukhi Mudra. Just make that mudra on your forehead and on your eyes. Close your ears. Yes. Inhale and exhale with humming bee sound. Three times. Relax your mind. After doing Bhramari, cool vibrations are coming in our head portion. Our Sahasrara chakra is now opened as Shivratri is there. So we will end our session with one prayer. Kapur Gauram Karunavataram Sansara Saram Bhujgendra Haram Sada Visante Hridyar Vinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Thank you, Shiva. Now for entire humanity, we will recite together. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhave. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms. When they are little warm, just keep your hands on your eyes, on your forehead, on your face, and take your own time to open your eyes.
Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye, everyone. Bye. Bye.